Good evening, everyone. Good evening, ma'am. So let us start. Many of you are here. So now we shall start with the session. Others will join in between. अच्छा, before starting the session, किसी को कोई doubt है पुराने उसमें या कुछ और general पूछना हो regarding anything? तो अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग से कुछ डाउट है, I will be starting with the presentation. I will be sharing the presentation. Yeah, is it visible to everyone now? Yes, ma'am. So yeah, we shall start. अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कितने मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम के और वो क्या क्या होते हैं. We have studied 3 methods: product method or value added method. The second was one was expenditure method. Third one was income method. So accordingly, we have studied all the 3 methods through which we can measure national income, or the methods which is in use. Government also uses these methods for calculating national income, and the most popular one you can say is expenditure method and value added method, because income method mein the limitation is that the income of people does not reveal their income means they don't reveal their income truly. हर कोई अपनी इनकम जो है उससे कम बताता है, या दे ट्राई टू हाइड देयर इनकम इन ऑर्डर टू इवेड टैक्स, ताकि टैक्सेस कम देने पड़े. तो द रियल सेंस और द रियल पिक्चर ऑफ नेशनल इनकम sometimes cannot be, majorly it is not captured by the income method. So mostly we go for expenditure method, consumption expenditure method, and value added method. So these are the 2 methods which are having less that income revelation वाला जो limitation है वो उसमें नहीं होता है इन दोनों में. So these were the 3 methods which we have studied. Now related to those 3 methods, what all extra things are there which we need to study in order to understand what is national income. Any questions related to national income, हम लोग कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें कोई टर्म आती है, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोस टर्म्स, मोस्टली जो जनरल यूज टर्म्स है हमको वो समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड these terms which we will discuss today in the class. और national income last class में we have studied the concepts, the methods. अभी इस क्लास में what are these topics we will be covering. Factor cost क्या होती है, market prices क्या होती है, basic prices क्या होती है, what are the difference between GDP and NDP. I think briefly we have already discussed the difference between GDP and NDP. The only difference between them is of depreciation. Nothing else. Inventory क्या होती है, how inventory is an important part of economy as well as of an important component of national income when we calculate the income through value added method. So there are these different topics we will be discussing. So first of all, let us start with inventory. Inventory is treated as capital. It is addition to the stock of capital of a firm and is known as investment. Inventory क्या होती है? If anybody is from commerce background, or if not even from that background, even if you have an idea, inventory क्या होती है? जो unsold stock होता है goods का, unsold stock of goods, that is called inventory. अगर समझ लो मेरी कंपनी है and in that company I have produced
से फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट था कि इन द ईयर ऑफ 2021 आई विल सेल 1000 यूनिट्स ऑफ माई गुड्स, लेकिन उसमें से only 800 has been sold, 200 units are still unsold, तो वो इन्वेंट्री स्टॉक में ऐड हो जाएगी मेरे. तो दैट अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी कॉल्ड इन्वेंटरी. तो इन्वेंट्री जो है हम उसको एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं. वी एड इट टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब वो एक तरह से कंपनी का कैपिटल में गिनी जाती है और उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बिकॉज प्रोड्यूस्ड गुड्स आर नेवर बैड. अगर समझ लो कभी स्कैर्सिटी हो गई फ्यूचर में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड आया था, कोविड में इतना प्रोडक्शन, क्योंकि कंपनीज वर क्लोज्ड, प्रोडक्शन हाउसेस वर क्लोज्ड, इंडस्ट्रीज वर क्लोज्ड, फूड बेवरेजेस सारी सबका प्रोडक्शन लॉकडाउन की वजह से रुक गया था. तो जब उनकी बिकॉज दे हैड दिस इन्वेंट्री, वो बोलते ना of inventory, so that is nothing but planned accumulation. ये यहाँ पे जो term which I have written, planned accumulation of inventory, it means when the firm कोई भी firm या कोई industry है, वो जानबूझ के extra goods produce करती है ताकि future में उनको पता है कि they cannot exactly anticipate या estimate कि मैंने 1000 अगर गुड्स प्रोड्यूस किए हैं तो 1000 के 1000 ही बिकेंगे, क्या पता डिमांड ज्यादा हो जाए, क्या पता 1200 की डिमांड हो जाए मेरे गुड्स की. तो आई कैन नॉट एग्जैक्ट नंबर हम लोग बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली वी कैन एंटिसिपेट, बट द अप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर वी कैन नॉट एस्टिमेट. तो हम लोग हमेशा एक रेंज रखते हैं कि 1000 से लेके 1200 के बीच में या 1000 से लेके 2000 के बीच में आई विल प्रोड्यूस दिस मच गुड्स. अगर उसमें से कुछ ज्यादा कम हुआ तो जो भी होगा आई विल बी एडिंग दैट टू माई इन्वेंट्री. तो जो इन्वेंट्री है वो मुझे नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगी. नेक्स्ट ईयर मींस इन द नेक्स्ट बिजनेस, इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आई विल सेल द इन्वेंट्री, द अनसोल्ड स्टॉक फर्स्ट, देन आई विल प्रोड्यूस द न्यू गुड्स. ऐसा रहता है. बिकॉज हम लोगों को जस्ट एज हाउस होल्ड्स वी सेव सम मनी फॉर आवरसेल्व्स, कि फ्यूचर में हम लोगों को कुछ जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास सेविंग्स रहनी चाहिए. सेम वैसे जो कंपनीज हैं वो भी गुड्स थोड़े एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके रखती हैं ताकि फ्यूचर में उनके गुड की डिमांड या तो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो अकॉर्डिंगली उनके पास एक्स्ट्रा थोड़े बहुत गुड्स रहने चाहिए ताकि वो फ्यूचर में जो डिमांड अगर शूट होगी तो उसको कोप अप करने के लिए उनके पास गुड्स ऑलरेडी अवेलेबल हो थोड़े. तो इन दैट वे दे ऑलरेडी अक्यूमुलेट द इन्वेंट्री. तो दैट इज, अगर कोई फर्म प्लान करके चल रही है कि अगर इस साल मुझे इन्वेंट्री जो है, whenever there is change in the now I will tell you inventory सबको क्या समझ में आ गया, what is inventory? Unsold stock of goods, and it is a part of capital or capital, fixed capital, that will be considered under investment. So it is treated as capital whenever there is addition and subtraction of this. तो हम लोग इसको कहाँ add करेंगे? इसको हम लोग as a capital means the capital are the goods which help us in production or which boosts our production. तो कैपिटल में हम इसको एक तरह से हमारा कैपिटल में क्यों, क्योंकि कैपिटल गुड्स का काम ये भी एक तरह से हम लोगों को भले ही से हेल्प नहीं कर रहे प्रोड्यूस करने में, लेकिन जब स्कैर्सिटी होती है गुड्स की तब ये इन्वेंट्री जो है ये हमको काम आती है उस पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल करने में. इसलिए हम इसको कैपिटल के अंडर कंसिडर करते हैं. इट इज कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट. So it will be adding to the stock of capital and will be considered under investment. And now I will explain the planned accumulation and the accumulation. What is that? So inventory सबको समझ में आया? What is inventory? Unsold stock of produced goods. Okay, simple term. इसमें किसी को कोई confusion है? मैम अगर डिमांड नहीं बढ़ी तो? डिमांड नहीं बढ़ी तो अनसोल्ड इन्वेंट्री का स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैंने प्लान किया है कि मेरे को 1000 गुड्स का प्रोडक्शन करना है. मैं चाहती हूँ कि मेरी इन्वेंट्री जो है वो अराउंड 200 गुड्स की हो. तो मैं 1200 गुड्स प्रोड्यूस करूंगी, 1000 मैंने सेल कर दिए, 200 गुड्स की मेरी इन्वेंट्री. और 200 मतलब दिस इज प्लान्ड अक्यूमुलेशन, मींस दिस इज प्लान्ड. आई हैव प्लान कि मैं 200 गुड्स ऊपर नीचे मेंटेन रखूंगी अपनी इन्वेंट्री. अगर डी एक्यूमुलेशन होता है, मींस अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में 1000 गुड्स का मैंने सेल करने का टारगेट किया था, बट एकदम से कुछ इमरजेंसी आ गई और बहुत ज्यादा डिमांड होगी, तो मुझे जो मेरी इन्वेंट्री है 200 गुड्स की, उसमें से मैंने सारे गुड्स सेल कर दी.
या से फॉर एग्जांपल 150 गुड सेल कर दिए, तो डी एक्यूमुलेशन हो जाएगा। मतलब जो अक्यूमुलेट मैंने किया था 200 उसको कम करना। डी एक्यूमुलेशन जैसे अपन बोलते हैं ना, डी एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट मतलब ज्यादा करना, स्पीड ज्यादा करना, डी एक्सेलरेट मतलब स्पीड कम करना। सेम अक्यूमुलेट मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, और डी एक्यूमुलेट मतलब उसको कम करना। तो डी एक्यूमुलेशन इज अपनी जो इकट्ठी की हुई स्टॉक है उसको कम करना। तो डी एक्यूमुलेशन कब होगा? जब समझ लो फॉर एग्जांपल अभी कोविड के टाइम पे ये डी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। व्हेन कोविड फेज वाज गोइंग ऑन, लॉकडाउन वर गोइंग ऑन, प्रोडक्शन बंद था, तो सारी कंपनीज अपनी इन्वेंटरीज जो उन्होंने बचा रखी थी, ज्यादा गुड्स उन्होंने जो प्रोड्यूस कर रखे थे, उन्होंने कुछ टाइम तो उसमें से ही अपनी जो गुड्स हैं वो सेल किए हैं, बिकॉज प्रोडक्शन वाज टोटली क्लोज्ड। फिर एक पॉइंट पे कभी कभार ऐसा होता था, ये फेज भी आया था कि सैनिटाइजर्स, और स्टार्टिंग में व्हेन दिस कोविड थिंग इट वाज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग, फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम तो सैनिटाइजर्स का शॉर्टेज हो गया था, बिकॉज द कंपनीज वर क्लोज्ड। और इतनी उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोगों का एकदम से स्टॉक ऑफ सैनिटाइजर की बोतल इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मास्क की शॉर्टेज हो गई थी, पीपल स्टार्टेड मेकिंग मास्क एट होम ओनली, क्योंकि जिस चीज का हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस चीज की कभी डिमांड इतनी शूट होगी, उसकी डिमांड इंस्टेंटली शॉर्ट टर्म में एकदम से ज्यादा इंक्रीज होगी। तो इतना प्रोडक्शन करके रखा ही नहीं था कंपनीज ने, क्योंकि कंपनीज को क्या पता था कि इस छोटी सी चीज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी इतने कम टाइम। तो वहां पे उनका डी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज हो गया। उन्होंने जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री जो प्रोड्यूस करके रखी थी वो भी खत्म हो गई, जीरो हो गई वो भी। तो दैट वाज अ डी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ सैनिटाइजर्स। तो इट एंडेड लाइक दैट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है कि आफ्टर से फॉर एग्जांपल आफ्टर कोविड व्हेन पीपल वर आउट ऑफ देयर जॉब्स, कुछ लोगों की जॉब चली गई, क्योंकि ये चीज है कि ये it extended for more than an year, almost 2 years we are struggling with this. तो बहुत लोगों की जॉब गई, पीपल आर अनएम्प्लॉयड नाउ, लोगों की इनकम कम हो गई क्योंकि लोगों के बिजनेस बंद थे थोड़े टाइम, इतना लॉस हुआ इकोनॉमी को। इकोनॉमी की हम बोल रहे हैं ना कि जीडीपी प्रोजेक्शन और ग्रोथ जो है, इकोनॉमी ग्रोथ वो भी कम हो रही है। ऑल इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग, वी नो दैट, बट नाउ हाउ। मॅडम यस यस, हाँ हाँ सर। मॅडम न्यू चॅप्टर चालू केले का? नहीं नहीं, वही चल रहा है हम लोगों का, नेशनल इनकम चल रहा है, पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, वो मेथड जो है हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमको नेशनल इनकम से रिलेटेड हमको अभी पढ़ने हैं। तो रिगार्डिंग हम लोग जो भी पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो सब कैसे यू पीपल विल रिलेटेड टू दोज थिंग्स, तो उसको पढ़ना भी जरूरी है। तो आई एम टीचिंग दोज जीडीपी, एनडीपी, नेशनल इनकम, जीडीपी और वेलफेयर का क्या रिलेशन होता है। देन वी विल लुक एट रियल जीडीपी, दीज बेसिक प्राइजेस, फैक्टर प्राइजेस, मार्केट प्राइजेस। ये सब चीजें क्या इकोनॉमी को अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द रीजंस बिहाइंड। तो हम लोग इसलिए ये पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे चैप्टर का पार्ट है, ये सब एनसीईआरटी में कवर्ड अप है, तो हम अलग से तुमको कोई एफर्ट देने की जरूरत नहीं। ओके कुछ समझ नहीं आया साहिल तो यू कैन, तुमने अभी ज्वाइन किया है क्या? तुमने तो स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था आई थिंक। नहीं मैडम अभी नहीं ज्वाइन, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा समझ नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में तुमने अटेंशन नहीं दिया होगा इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा। चलो कोई नहीं, आई विल एक्सप्लेन अगेन। इन्वेंटरी तुमने सुना था, हम लोगों ने इन्वेंटरी डिस्कस किया था। इन्वेंटरी क्या होती है? इन्वेंटरी वापस इन्वेंटरी से बताऊं मैं? हाँ मैडम चालू करो। Okay, please pay attention everyone, and I am again saying repeating this thing ki you should have your copy and pen with you whenever I am telling something or saying something. You people should have a habit of writing, because काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग हर एक चीज we cannot write down on the board, we cannot write down in the presentation, but we teach that thing. Or I say sometimes, many times I say some extra things according to what you people ask questions based on that. तो उनके आंसर्स या तो कोई पॉइंट ऐसा लगता है which is important for you, you should write those things down. So every time whenever you come in the class, even if it is online, you should have a habit of writing down the important points and making your own notes. Nothing in this world will help you more than making your own notes or self study.
ये चीज चाहे से यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन स्टडीज और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, no matter what you are doing, always your self-made notes will only help you, not others, what others write, what others give you notes. You should make your own notes. I will always advise that way. So whenever I am discussing anything, please have a habit of writing the important things down. तो इन्वेंट्री, साहिल प्लीज पे अटेंशन. अब इन्वेंट्री मैंने बताया था जो गुड्स अनसोल्ड होते हैं, मींस जो समझ लो अगर 1000 गुड्स का टारगेट कंपनी ने बनाया है सेल करने का, कि इस साल मेरी जो कंपनी है वो 1000 गुड्स सेल करेगी मार्केट में, लेकिन उस 1000 में से सिर्फ 800 सेल होते हैं, 200 नहीं हो पाते, 200 की डिमांड नहीं होती, तो वो जो 200 जो अनसोल्ड गुड है वो हम लोग इन्वेंट्री में कहीं रखेंगे. दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री. समझ में आया तुमको कंसेप्ट ये? हाँ मैडम. हाँ, तो वो 200 जो गुड्स जो नहीं सेल हुए, जिसकी डिमांड थी नहीं मार्केट में, जो अभी भी दुकान में या फैक्ट्री में अभी भी रखे हैं, दैट अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्वेंट्री. तो वो इन्वेंट्री जो है वो मोस्टली हम लोगों के कैपिटल एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, जो कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स है इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट होती है, हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट में ही काउंट करते हैं. तो उसमें मैं आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ प्लान्ड अक्यूमुलेशन एंड डी अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री. क्या होता है प्लान्ड अक्यूमुलेशन? मतलब जब कोई भी कंपनी प्लान करके चलती है कि मुझे 200 तक की गुड्स अपनी इन्वेंट्री में रखने और 1000 गुड्स सेल करने, और एग्जैक्टली सेम वैसा ही होता है. प्लान जो उन्होंने किया है, प्लान के अकॉर्डिंग ही उनके 1000 गुड्स सेल होते हैं और उनके 200 गुड्स वो इन्वेंट्री के लिए रखते हैं. डी-अक्यूमुलेशन होता है मतलब वो 200 का जो गुड उन्होंने सोचा था कि मैं 200 गुड्स रखूंगा और 1000 गुड्स सेल करूंगा, पर हुआ क्या, इंस्टेड ऑफ दैट 1000 गुड्स डिमांड एकदम से, कुछ सिचुएशन इकोनॉमी में ऐसी आ गई कि डिमांड एकदम से शूट हो गई, और जो उनकी इन्वेंट्री थी उसमें से भी उनको थोड़े गुड्स को डिमांड को पूरा करने के लिए लोगों की, उनको अपनी इन्वेंट्री को में से थोड़े गुड्स बेचने पड़े. तो that has resulted in de-accumulation of inventories, क्योंकि उनकी 200 गुड्स की इन्वेंट्री थी. लेकिन अब कोविड में आई वाज टेलिंग कि कोविड के टाइम ऐसा हुआ था कि सैनिटाइजर्स और उसकी एकदम से जब डिमांड जो है हाइक हो गई थी, people were purchasing sanitizers and masks like anything. तो एकदम से उनकी जब डिमांड शूट अप हुई और इतना प्रोडक्शन था नहीं, कंपनीज को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि एकदम से इतने शॉर्ट टर्म में इतनी ज्यादा सेल हम लोगों की बढ़ जाएगी सैनिटाइजर. तो उनका क्या हुआ, उनकी डी अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री हो गई. उन्होंने जो एक्स्ट्रा बचा के फ्यूचर, मतलब अपने एक एक्स्ट्रा इन्वेंट्री अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स उन्होंने जो रख रखा था, उनको उसमें से सेल करना पड़ा अपने गुड्स को टू फुलफिल द डिमांड, स्पाइक इन द डिमांड इन द इकोनॉमी. तो उसको डी अक्यूमुलेशन कहते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड होता है. और प्लान्ड अक्यूमुलेशन इस जो हम लोग प्लान करके अपनी इन्वेंट्री का जो स्टॉक है वो हर साल दर साल इंक्रीज करते हैं, कि अभी 2021 में मैंने प्लान किया है कि मैं 1000 इन्वेंट्रीज रखूंगी. 2022 में आई विल प्लान कि आई विल ऐड 100 मोर गुड्स टू माय इन्वेंट्री. 1000 से मुझे 1100 गुड्स करने. फिर नेक्स्ट ईयर आई विल प्लान कि मुझे 1300 करने हैं. ऐसे करके आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग माय स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री और गुड्स, और आई विल कीप ऑन मेंटेनिंग कि मुझे हर साल 200 गुड्स की इन्वेंट्री मेंटेन रखनी ही रखनी है. तो कभी कभार वो ऊपर नीचे होती रहती है. समटाइम्स देयर इज अक्यूमुलेशन और समटाइम्स देयर इज डी अक्यूमुलेशन. अब प्लान डी अक्यूमुलेशन तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको कि कैसे डी अक्यूमुलेशन होता है. जो हमने अनसोल्ड गुड्स की जो इन्वेंट्री इकट्ठा की है, वो एकदम से किसी वजह से कोविड के टाइम जैसे हुआ ऐसा कि सैनिटाइजर्स की एकदम से डिमांड बढ़ गई, तो कंपनीज को अपनी इन्वेंट्री में से भी सेल करना पड़ा टू फुलफिल द डिमांड. दैट वाज डी अक्यूमुलेशन. अब when someone of you asked कि मैम जब डिमांड कम होती है तो क्या होता है? जब डिमांड कम होगी तो उसमें क्या होगा, अक्यूमुलेशन होगा. दैट विल बी अनप्लान्ड अक्यूमुलेशन. मतलब इकोनॉमी में किसी भी फर्म ने प्लान नहीं किया था. उन्होंने प्लान किया था कि हम लोग 1000 गुड्स सेल करेंगे, लेकिन डिमांड 500 गुड्स की भी नहीं हुई. So there are only 400 goods which has been sold and 600 are still left with them unsold. तो वहां पे वो होता है unplanned accumulation. We can say that is unplanned accumulation कि टारगेट कंपनी ने किया था 1000 गुड्स की सेलिंग का, लेकिन उनका सेल कितना हुआ, उनका सेल 400 ही सेल हुआ, क्योंकि उनके गुड की डिमांड ही नहीं.
तो वो फेज जो है इकोनॉमी इज आफ्टर जस्ट इन 2021 आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ कोरोना और कोविड 2020 के बाद तो 2021 में बिफोर द सेकंड फेज वी फेस द सेकंड फेज व्हाट हैपेंड इकोनॉमी वाज इन अ सिचुएशन की जो डिमांड है बिकॉज पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स आई वाज ऑन दिस पॉइंट आई वाज टेलिंग दिस पॉइंट टू यू पीपल कि लोगों की जॉब चली गई देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट बिजनेसेस वर क्लोज्ड तो उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं हुआ लोगों की जॉब चली गई तो क्या कुछ लोगों की इनकम कम हो गई काफी लोगों की इनकम कम हो गई और जो लोग बिजनेस सेक्टर में थे उन लोगों का बिजनेस की भी से जो उनकी इनकम आती थी प्रॉफिट्स उनके प्रॉफिट्स लेवल भी कम हो गए तो हुआ क्या जो मनी सप्लाई थी इकोनॉमी में वो कम हो गई मनी सप्लाई कम हुई तो जो लोगों के पास जब इनकम ही नहीं है समझ लो किसी की जॉब चली गई है तो ऑब्वियसली वो डिमांड कम करेगा अब उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा पहले वो समझ लो अगर खाने की चीजें वो ही यूज्ड टू बाय अराउंड 10 to 15 kgs ऑफ ईटेबल्स इन हिज हाउस अब उसकी इनकम कम हो गई है या उसकी जॉब चली गई है तो ही विल ट्राई कि मैं 5 kg में अपना काम चला लूं क्योंकि अभी मेरे पास खरीदने के लिए पैसे या सैलरी नहीं है तो इन दिस मैनर व्हाट हैपेंड ऐसे एक एक करके ये स्प्रेड हो गया ये इफेक्ट मोस्टली सबकी थिंकिंग सेम वे में हो गई कि अभी लॉकडाउन हो गया है अभी चीजें नहीं मिलेंगी तो हम लोगों की जॉब चली काफी लोगों की जॉब गई थी उस टाइम पे many people were thrown out of their job they were laid unemployed so because of that those unemployed people अगर वो इकोनॉमी में अगर वैसे समझ लो 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 10 लाख भी अगर वैसे लोग हैं जिन लोगों की इनकम कम हुई है या जिन लोगों की जॉब चली गई है तो what these 10 lakh people will think they will try to reduce their consumption they will try to reduce their demand in current situation in current scenario because they are not having that much income तो ऐसे टाइम पे क्या होती है जो गुड्स ऑलरेडी जो प्रोड्यूस कर रखे हैं कंपनीज ने या इंडस्ट्रीज ने उसकी डिमांड धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान के कम करने से बहुत अफेक्ट होगा लेकिन अगर धीरे धीरे ऐसी इकोनॉमी में सबके साथ ये इफेक्ट हो गया कि एवरीबॉडी वाज डिमांडिंग लेस क्योंकि सबके पास पैसे की कहीं ना कहीं क्रंच और क्राइसिस हुए थे तो एवरीबॉडी स्टार्टेड थिंकिंग दैट वी विल कंज्यूम लेस अभी हम लोग क्या थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं अपनी डिमांड फ्यूचर में थोड़ा बिजनेस ठीक हो जाए या थोड़ी अच्छी जॉब मिल जाए या आई विल गेट अ जॉब देन आई विल परचेज दिस थिंग तो सबने अपनी डिमांड पोस्टपोन कर तो उससे क्या हुआ अनप्लैन्ड अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री हो गई कि कुछ कंपनीज के जो गुड्स थे जो एकदम से वो बोलते हैं ना कि विदाउट एनीथिंग उन लोगों के जो गुड्स है वो सेल नहीं हुए बिकॉज ऑफ लो डिमांड उनकी जितने समझ लो उन्होंने 600 गुड्स प्रोड्यूस की तो 600 में से 200 भी नहीं बिके 400 उनके अनसोल्ड पड़े तो ऐसे करके दैट इज कॉल्ड अनप्लैन्ड अक्यूमुलेशन जो उन्होंने प्लान नहीं किया था दे प्लान्ड द कंपनीज प्लान दैट दे विल सेल दिस मच गुड्स टारगेट उन्होंने फिक्स कर रखा था 1000 का लेकिन उतने भी सेल नहीं हुए बिकॉज ऑफ लो डिमांड लो इनकम ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ सच कोविड क्राइसिस तो कोविड की वजह से पहले और बाद में कुछ पर्टिकुलर चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हुई और ओवरऑल जो कंजम्पशन की कुछ चीजें हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उन सबकी डिमांड एकदम से कम हो गई क्योंकि पीपल वर पोस्टपोनिंग देयर जो हैवी गुड्स जो हैं जो महंगे आते हैं उसकी डिमांड लोगों ने पोस्टपोन कर दी तो एकदम से जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर इट वाज फेसिंग रिसेशन एकदम सेल्स जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर की कम हो गई ऐसे करके सेक्टर वाइज अकॉर्डिंग टू द सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द गुड्स सब किसी न किसी फेज में किसी न किसी सेक्टर को अफेक्ट हुआ है किसी सेक्टर में किसी गुड्स में जैसे मेडिकल गुड्स और सैनिटाइजिंग अब कोई मेडिसिन है पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल दी वैक्सीन्स देन दिस बुखार खांसी जुकाम की जो दवाइयां हैं उन मेडिसिन की एकदम से डिमांड इंक्रीज हो गई थी लॉकडाउन के टाइम पे बिकॉज एवरीबडी वाज परचेजिंग टैबलेट्स ऑफ फीवर कोल्ड कफ एवरीथिंग तो उसकी डिमांड तो पर्टिकुलर डिमांड इंक्रीज हुई है जिसकी बहुत ज्यादा क्राइसिस होगी लेकिन जो चीजें जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज ऑटोमोबाइल्स मींस जितने भी व्हीकल्स हैं people were there inside their houses they were not traveling much तो एकदम से vehicles की जो डिमांड है वो कम हो गई क्योंकि people were inside their house they were not having money to buy new cars and that this and that so accordingly sector wise affect हुआ है समझ में आया what does this planned accumulation and deaccumulation deaccumulation मतलब कम होना accumulation मतलब बढ़ना
मतलब इकट्ठा करना. तो आई होप ये इन्वेंट्री कंसेप्ट इज क्लियर विद एवरीवन. व्हाट इज इट्स यूज, आई विल एक्सप्लेन इट. अभी आ रहा है वो कहाँ पे यूज होगा, ये इन्वेंट्री वाला कंसेप्ट कहाँ यूज होगा, आई विल टेल यू. बट अभी तक जो समझाया वो समझ आया सबको? Yes, ma'am. Okay. So I hope I was able to answer your question. You only asked, right? If demand will Yes, be less. ma'am. Yes, ma'am. So this low demand or decrease in demand will lead to unplanned accumulation of goods or inventories. So now this gross value added method से जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों का इन्वेंट्री का स्टॉक है, we will add those inventory stock into the gross value added. तो हम लोग अब जो नया फॉर्मूला होता है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड का विल बी this gross value added gross value of the output produced by the firm. So that was पहले हम लोगों ने ये फॉर्मूला, और माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म. जो हम लोगों के इंटरमीडिएट गुड्स होते थे, मींस जो हमारी कॉस्ट होती थी, वो हम लोग माइनस करते थे. अभी भी हम सेम वही करेंगे, बस चेंज क्या आएगा, वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज. अभी चेंज इन इन्वेंट्रीज हम लोग कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री. ओपनिंग स्टॉक मींस साल के स्टार्टिंग में जितना स्टॉक है और साल के एंड में जितना स्टॉक है इन्वेंट्री का. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक टर्म इन्वेंट्री. तो से फॉर एग्जांपल 2021 1st April 2021 means the opening stock of inventory is 1000 goods, and at the end of the year, that is 31st March 2022, so the closing stock of capital is closing stock of inventory is 800. So 800,000 minus 800, 200 is the change, or we can say 200 is the change of inventory. So inventory कम हुई है, तो कम हुई है तो means it has gone in negative. अगर यही चीज 1200 होती तो 1000 माइनस 1200, और वी कैन से 1200 और 1000 के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 200 का डिफरेंस. तो 200 से इंक्रीज हुई है मेरी जो है स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, तो दैट इंक्रीज इन इन्वेंट्री विल बी एडेड टू इट. और अगर डिक्रीज है इन्वेंट्री में तो हम लोग माइनस करें. सेम सिमिलरली दिस वैल्यू ऑफ चेंज, जो भी चेंज आएगा, वैल्यू ऑफ सेल्स बाय द फर्म, जो वैल्यू कितनी, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1000 रुपीज के गुड्स सेल किए तो दैट इज वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ माय फर्म. मैंने मेरी सेल्स जो है 100 गुड्स की और मैंने 1000 रुपए में बेची है, तो वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ द फर्म इज 1000 रुपीज प्लस वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज. चेंज कितना था, 1000 से 1200 के बीच में 200 इन्वेंट्रीज का चेंज था, एंड दैट 200 इन्वेंट्रीज, इससे फॉर एग्जांपल इट इज आल्सो वर्थ ऑफ ₹200. तो प्लस 200 वी विल डू. अब माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स की समझ लो कॉस्ट थी 100 रुपीज, तो माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म माइनस 100 कर देंगे. सो 1000 प्लस 200 माइनस 100, सो इट विल बी 1100. तो हमारा जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा 1100 होगा. हमारी सेल की कितनी, सेल्स जो है उसकी वैल्यू प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज. चेंज इन इन्वेंट्रीज इज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री. साल के स्टार्टिंग में कितना है और साल के एंड में कितना है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस वी विल ऐड. इफ इट इज पॉजिटिव, अगर इंक्रीज है तो हम लोग ऐड करेंगे, अगर वो नेगेटिव चला गया है, अगर डीएक्यूमुलेशन हो गया है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे. सो दिस इन्वेंटरी थिंग विल बी एडेड हियर. अब इससे रिलेटेड से फॉर एग्जांपल आई विल यू विल द आइडिया in a better way. See, this is change in inventory. Production of the firm during the year minus sale of the firm during the year. So inventory के बीच में, और closing stock of good minus opening stock of good, और closing stock of inventory minus opening stock. So these are the various formulas through which you can find a change. कि change in inventory कितना होता है. Now the next important inventory. So inventory में how we will be treating in the inventory in calculating the value through national income through value added method.
a firm, say we are in while calculating the national income through value added method, we are taking value of production of firm. But a firm may be unable to sell all of its produce. That unsold produce is called inventory. In such a case, you will have some unsold stock at the end of the year. Conversely, it may also happen that a firm had some initial unsold stock to begin with. That is opening stock. So during the year that follows, it has produced very little. अगर already मेरी कंपनी के पास 1000 unsold stock पड़ा था, कोरोना के बाद क्या हुआ, after COVID phase, these automobile sector, they were having say thousands of units of unsold goods of vehicles. तो उन्होंने अभी प्रोडक्शन बंद कर रखी है, क्योंकि उनके जो अनसोल्ड गुड्स हैं वो ऑलरेडी इतने हैं कि उससे ही उनकी सेल्स चल जाएगी, because they will not produce. So if they are having good amount of inventory, so they will not produce. They will first clean that, clear and sale जो हम कहते हैं. They will first clear those unsold goods and then only they will start with the new production. So it may also happen that a firm had some initial unsold stock to begin with. During the year that follows, it has produced very little. ज़्यादा उनको produce करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका unsold stock बहुत ज़्यादा था. But it has met the demand in the market by selling from the stock it had beginning of the year. Opening stock of inventory, closing stock of inventory, opening year के opening में कितना stock है, ending में कितना stock है. So how shall we treat these stocks in which a firm may unintentionally or intentionally carry with itself? Let us remember that firm buys raw material from the from other firms. The part of raw material which gets used up is categorized as intermediate good. What happens to part which does not get used up? The stock of unsold finished goods or semi-finished goods or raw material which a firm carries from one year to next year is called inventory. Inventory is a stock variable because it is measured at a point of time. It may have a value at the beginning of the year. It may have a higher value at the end of the year. Prices भी बढ़ती हैं घटती हैं, तो उस हिसाब से inventory की value भी ऊपर नीचे होती है. In such a case, inventories have increased or increased, accumulated if the value of inventory is less at the end of the year compared to the beginning of the year. Inventories have deaccumulated. I have already explained this. So we can therefore infer that change in inventories of a firm during a year is equal to production of the firm during the year minus the sale. कितना produce किया था starting में 1000 goods और sale कितना हुआ 800. So जो 200 unsold है, we can consider that as our inventory. So that is the stock of inventory at a particular point of time. अब हमको जब change calculate करना होगा, तो हम inventory का closing और opening का stock देख के हम लोग उसको change we will. So this was the treatment of inventory which we will be doing. So inventory को हम लोग जो stock of inventory है, change in the inventories, value of change in the inventory, change calculate करना कैसे, opening और closing को minus करना है एक दूसरे में से, तो उसका जो difference आएगा that will be the change, and accordingly we will add it, that change if it is positive we will add it to the value of sale of the firm, and then we will minus the intermediate goods की cost, and accordingly gross value added will be calculated. So this was about inventory, how it has to be treated. Now we will be looking at net factor income from. The next concept which we will be studying is net factor income from abroad, NFIA. Yes. So this will be the next concept which we'll be studying. GDP plus factor income earned by the domestic factors of production employed in the rest of the world minus factor income earned by the factors of production of the rest of the world employed in the domestic economy. Now I will explain what is this. हम लोग GDP को, जो gross domestic product है, उसको हम GNP, that is gross national product, उसमें कैसे convert कर सकते हैं, जब हम net factor income from abroad. I will make it a different point. Say net factor income from abroad. So we will add this NFIA करके एक
अमाउंट होती है, when we will add this NFIA to the GDP, so this domestic thing will convert into national. It will become national. Gross domestic product will convert itself into gross national product. What is the difference between GDP and GNP? It is only the difference of net factor income from abroad. Net factor income from abroad, NFIA add होते ही GDP बन जाता है GNP. Domestic thing will become national. How? What is that? Let me explain that. Say for example, हम लोग जब import export करते हैं, या हम लोग national income GDP जब हम calculate करते हैं, तो हम लोग सिर्फ domestic territory, जो इंडियन जोग्राफिकल एरिया, जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया, उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोगों ने तब डेफिनेशन पढ़ी थी, इफ यू पीपल रिमेंबर, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री within a year. So value of all final goods and services produced within the country in the country or in economy in a financial year, in 1 year or so. So उसका GDP का हमने ये definition पढ़ा. GNP is also including the income which is out of the territorial region of India. That is, हम लोग for example जो Indian citizens who are living outside in foreign countries, but they are earning in foreign countries, they are also Indian citizens and they are adding to the national income of our country. क्योंकि वो भले ही से यूएस में रह रहे हैं, लेकिन वो उनका फैमिली इधर है, they are citizen of India, तो they are earning for they are just posted there. For example, जो इंडियन एम्बेसी के लोग होते हैं, या जो मल्टीनेशनल कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज में लोग, काफी लोग जाते हैं यूएस में जॉब करने, their families are here but they do job there. तो वो अर्न भले ही से वहां कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो इनकम है वो इंडिया की नेशनल इनकम में कैलकुलेट है. सो that is factor income from earned by the domestic factors of production. Domestic factors of production कुछ भी हो सकता है, लेबर हो सकता है, that is human beings, that can be some machinery, that can be some capital machinery, or some entrepreneur, some business or something. Land, so obviously we cannot take India's land and sell it to some other country. Land जो है वो fixed रहता है, it is an immovable property. So any factor of production other than land which is employed in foreign country but it is a citizen of domestic, means this nation, तो भले ही से वो वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो earn हमारे देश के लिए कर रहे हैं because they are Indian citizens. So that will be factor income earned by the domestic factors of production employed in the rest of the world. समझ में आया? Factor income earned by. Factor income, they might earn profit, they might earn salaries or wages, they might earn some interest on their loans which they have given. So all these things are the factor incomes which these factors of production, labor, capital, entrepreneur, they will be earning when they are employed in the rest of the world. They can be employed anywhere. They can be employed in Dubai, in UK, in US, in Japan, in Australia, anywhere in this world. So rest of the world. तो बाहर foreign countries में रह के जो लोग हमारे देश के लिए कमा रहे हैं पैसे, they are Indian citizens. So their income is considered as factor income earned by the domestic factors of production employed in the rest of the world. सबको समझ में आया इसका मतलब? What is factor income earned by domestic factors of production? Yes, ma'am. मॅडम परत एकदा सांगता का? हाँ, फैक्टर इनकम देखो ध्यान से सुनना. फैक्टर इनकम या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये NFIA जो मैंने नीचे लिखा है, NFIA. So we call it as net factor income from abroad. मतलब अब जैसे हमारे देश में हम लोग जीडीपी में सिर्फ जो डोमेस्टिक हमारी जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसके अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कंसिडर करते हैं हम लोग हमारी नेशनल जीडीपी कैलकुलेट करने की. लेकिन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है जीडीपी, वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब कुछ लोग क्या होते हैं साहिल, तुमको जैसे पता होगा, कुछ लोग होते हैं इंडिया के सिटीजन लेकिन वो देश के बाहर काम कर रहे हैं. कोई कर रहा है यूके में, कोई कर रहा है यूएस में, कोई कर रहा है चाइना में, कोई जॉब कर रहा है, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन है. ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन स्टेट.
So he is a citizen of our country, but he is employed in some other country. He is earning in their currency, but he is adding to the national income of our country. क्योंकि उसके परिवार इधर है, तो वो पैसे भेजता है यहाँ पे, उसका जो पैसा है वो कन्वर्ट होता है इंडियन रुपीस में, तो उससे क्या होता है, हमारे कंट्री में जो इनकम है, हमारे कंट्री की, हमारे लिए कमा रहा है, वो हमारे देश के लिए कमा रहा है। कोई इंसान अगर वो बाहर भी काम कर रहा है, देश के बाहर, लेकिन वो सिटीजन इंडिया का है, तो हम लोग यही कहेंगे कि वो जो इनकम है वो लोग हम नेशनल इनकम में हमारी इंक्लूड करेंगे। तो जब वो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाती है वो चीज, और हम लोग जब इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये देखो यहाँ पे ये टर्म है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के बाहर भी जो इंडिया के लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी इनकम भी हम लोग हमारी इनकम में ऐड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया? जो बाहर काम कर रहे हैं। मैडम उनकी इनकम इंडियन रुपीस में कैसे कन्वर्ट होती है? उनकी इनकम जब वो, समझ लो अगर उनके अपने फैमिली वालों को भेज रहे हैं, या टैक्स पे कर रहे हैं, या फैमिली वालों को सेंड कर रहे हैं अपने पैसे, इंडिया में अगर वापस आ रहे हैं वो लोग जॉब छोड़ के, या रेगुलर जॉब नहीं भी छोड़ रहे, तो क्या करते हैं वो लोग, ट्रांसफर करते हैं अपनी इनकम, तो उन ट्रांसफर को कहते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस तो समझ लो अगर कोई कमा रहा है डॉलर में, वो वहां बैठे बैठे सेंड करेगा अपनी फैमिली को यहाँ पे पैसे इंडिया में, तो वो पैसे कन्वर्ट होके आएंगे डॉलर से इंडियन रुपीस में, तो दैट इज ऑलरेडी डन। और वो समझ लो $1 की वैल्यू 78 रुपीज है, तो उसने अगर $4 भेजे हैं, तो $4 इंटू 78 रुपीज कर लो तुम, तो इतने पैसे वो अपनी फैमिली को भेजेगा, तो वो कन्वर्ट होके आते हैं इंडियन रुपीज। तो उससे फायदा कौन से देश का हुआ, हम लोग कमा वहां पे रहे $4, और यहाँ पे हम जब भेज रहे हैं तो वो 70 टाइम्स, मतलब $1 की 70 रुपीज अगर वैल्यू, तो इट इज मल्टीप्लाइंग बाय 70, तो हम लोगों का फायदा हो रहा है ना उससे, हम लोगों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। बाहर हम कम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट होके ज्यादा हो रहे हैं। पैसे भेजता है तो उस पर टैक्स लगता है क्या? उस पर टैक्स तो लगता है, थोड़ा बहुत लगता है, ज्यादा नहीं लगता। रेमिटेंसेस और आपकी इनकम पे तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इनकम टैक्स, अगर आपकी इनकम 2-2.5 लाख से 3 लाख से ऊपर है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इवन इफ यू आर स्टेइंग आउटसाइड द नेशन, इनसाइड द नेशन, इफ यू आर अर्निंग मोर देन 3 lakhs, you will have to pay tax. ओके ओके मैडम। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ में आया, जो बाहर रह रहे हैं जो लोग, लेकिन वो इंडिया के सिटीजन है, वो हम लोगों के लिए कमा रहे हैं। So that is net factor income, sorry, factor income earned by domestic factors of production employed in the rest of the world. अब लोग हम इसमें से माइनस क्या करते हैं, फैक्टर इनकम earned by the factors of production of the rest of the world employed. अब बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके लोग इंडिया में रह के काम कर रहे हैं, और वो बाहर के सिटीजन, जब चाइना का कोई है, या ऑस्ट्रेलिया से कोई है, मोस्टली फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान से कोई है, पाकिस्तान से कोई है, जो यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन वो पैसा भेज रहे हैं अपने देश में। तो जब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बाहर देश में जाके अपने देश के लिए पैसा कमा के हम लोग अपनी फैमिलीज को भेज सकते हैं, तो दूसरे लोग भी ऐसा कर सकते हैं इंडिया में आके। तो वो इनकम जो है वो एक तरह से इंडिया से बाहर जा रही है, which is factor income earned by the factors of production of the rest of the world employed in India or employed in domestic economy. तो उसको हम लोग माइनस करेंगे हमारी नेशनल इनकम से, क्योंकि वो पैसा हमारे देश का नहीं है, वो पैसा उन लोगों का है जो अपने अपने देशों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बस वो इंडिया में नौकरी कर रहे हैं। वो कोई पाकिस्तान का है, कोई अफगानिस्तान का है, somebody is from Iraq, somebody is from Iran, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आके इंडिया में जॉब कर रहे हैं, कोई दुबई से है, लेकिन वो अपने देश के सिटीजन हैं, वो अपने देश में वापस अपना सैलरी है, दे सेंड देयर सैलरी टू देयर फैमिलीज, दे आर अर्निंग फॉर देयर नेशन, तो उनकी इनकम इंडिया से विड्रॉ होके उनके देश में जाएगी। तो दैट इनकम नेट और द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन in the rest of the world employed in India or employed in domestic country, we will deduct that income from our national income, क्योंकि उस पैसे पे हमारा हक नहीं, वो किसी और का पैसा। In the similar manner, अगर कोई MNC हो गई, say for example Toyota हो गई, this is Suzuki, is a Japanese company, I guess. And then there is there are different जितनी भी Deloitte हो गया, Accenture हो गया, there are so many multinational companies.
which are working in India. तो उनके जो profits होते हैं, Google हो गया, Facebook हो गया, तो उनके भले ही से employees इंडिया के हैं, those who are working here, but उनके कुछ employees जो होते हैं जिनकी posting इंडिया में हो रखी है, but they are from some other country. So for example, if Google is opening its headquarters in India, then what will happen? Some employees will also come off outside country. They will be, working in headquarters of Google in India, क्योंकि उनकी posting इंडिया में हुई है, लेकिन वो हैं दूसरी country. But only they are working in India. Otherwise, nothing else of their income will be added to India's national income, क्योंकि वो दूसरे देश के हैं, वो हमारे देश के नहीं है. इसलिए they are citizens of other countries, so their income will be deducted from our national income. So the difference between factor income earned by the domestic employees and the factor income earned by the foreign employees, उनके बीच में जो difference होता है, that is called net factor income from abroad. तो अब ये जो net factor income from abroad आता है, मतलब इसका मतलब है कि हम लोग earn ज्यादा कर रहे हैं जितना हम लोग बाहर लोगों को earn कर, बाहर के लोग हमारे यहाँ से earn कर रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग बाहर के लोगों से earn कर रहे हैं, उसके बीच का जो difference है, that difference is called net factor income from abroad. And we assume that mostly it is in positive, but reality में ऐसा होता नहीं है. Mostly हम लोगों के exports, अब हम लोगों की काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग जो चीज बेच रहे हैं, exports हम लोगों कम है, लेकिन हम लोगों के imports बहुत ज्यादा हैं. तो export import के बीच में imports ज्यादा हो जाएंगे, exports कम हो जाएंगे, तो मतलब हम लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, हम लोगों का income कम हो रही है, हमारा revenue कम. In the similar manner, if people are more employed, foreign people are more employed in our country and we are less employed in other countries, तो हम लोगों का जो factor income का जो difference है वो negative में चला जाएगा. Means the amount, for example, there is 1,000 rupees difference between these two, वो अभी plus में है, हम लोग ज्यादा earn कर रहे हैं instead of we are the other people are earning. The difference is that 1,000 rupees. So GDP plus 1,000 will be GNP. But if that is minus 1,000, if other persons in our country are earning more than what we are earning from rest of the world, that will become minus 1,000. So this net factor income will be deducted from the GDP. अगर एक चीज ज्यादा है दूसरी चीज कम है तो whenever we want to convert GDP to GNP, gross domestic product to gross national product, we will be adding net factor income from abroad. So that will become GNP. Is that clear? GDP और NDP के बीच का difference is only the difference of depreciation. See. मैम हाँ हाँ yes मैम जैसे आपने बताया कि कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा है अब्रॉड में, तो पैसे भेजते वक्त जो टैक्स लगता है, अगर वो इंडिया में भेज रहा है, इंडिया में उसका अकाउंट है, तो वो मतलब गवर्नमेंट के पास एज अ इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स जाएगा. लेकिन जब वो पैसे डॉलर इंडियन रुपीज में ट्रांसफर हो रहे, तब जो टैक्स लगेगा उस पे, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कंसिडर करेंगे क्या हम उस टैक्स को, that particular type of conversion fees is not that much, and अगर टैक्स उसको हम लोग उसको डायरेक्ट टैक्स कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज दैट इज ऑन देयर इनकम, जो इनकम पे लग रहा है डायरेक्टली. अगर किसी गुड पे लग रहा होता तो हम उसको इनडायरेक्ट टैक्स में कर सकते थे कंसिडर, बट मोस्टली वी डोंट कंसिडर अंडर इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज वो डायरेक्टली इनकम पे लग रहा है. और मोस्टली रेमिटेंसेस पे टैक्स इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि रेमिटेंसेस हम लोगों को कमा के दे रहे हैं, तो हम लोग उस पर टैक्स नहीं लगाते. लेकिन जो इनकम वो अर्न कर रहा है उस टोटल इनकम पे हम लोग टैक्स लगाते हैं. अगर समझ लो उसकी इनकम है $1,000, उसमें से उसने $4 भेजे, तो हम लोग $1,000 पे जो है उसकी जो टोटल इनकम है, वी कैन टैक्स दैट पर्टिकुलर इनकम. उसका समझ लो 5% 10% जो टैक्स उसका जिस स्लैब में वो फॉल होता है, तो उस अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना पड़ेगा इनकम पे. लेकिन जो पैसा $4 भेज रहा है वो ऑलरेडी एक बार पे कर चुका है, वो $4 इंक्लूडेड है उसकी इनकम में, तो वो दूसरी बार पे नहीं करेगा. इट वी विल नॉट पे द टैक्स अगेन ऑन दैट $4 बिकॉज दैट $4 ही सेंडिंग हियर, तो वो ऑलरेडी $4 अकाउंट हो चुके हैं, उसकी इनकम में टैक्स कट चुका है. तो द ओनली थिंग विल बी दैट he will send the money here
into our country in his parents account or whatever family's account he is in, and that will be converted in through the banks. समझ लो उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका से अगर उसने ट्रांसफर किया है एंड इट ही इज ट्रांसफरिंग इट टू बैंक ऑफ इंडिया, देन दैट ट्रांसफरिंग फीस विल बी लेवीड बाय द बैंक्स. जो बैंक के चार्जेस होते हैं अपने सर्विस चार्ज करने के, से बैंक अगर कन्वर्ट कर रहा है करेंसी को डॉलर से, तो वो अपने पर्टिकुलर उनके चार्जेस रहते हैं, वो चार्ज लगेंगे अलग से. his income will not be taxed that $4 because that is already included in this $1,000 income. और इनकम टैक्स वो पे कर चुका, तो वो अलग से $4 पे नहीं करेगा. वो जो कन्वर्जन की जो फीस होती है उसको कहते हैं सर्विस चार्ज. वो बैंक टू बैंक डिफर करता है. अगर मुझे हम लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं तो एटीएम से विड्रॉल चार्जेस भी 5 रुपए 10 रुपए होते हैं जो हमारे को हर एक ट्रांजैक्शन पे लगते हैं. हम लोग जब यूपीआई ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अदर पर्सन, तो उस पर भी कुछ नॉमिनल फीस लगती है. वो बैंक के चार्जेस होते हैं, बैंक सर्विस देने का जो चार्ज है वो लेती है. ऑल्दो वो हमको दिखता नहीं है लेकिन इट इज देयर ऑलवेज. सो इफ यू गो थ्रू योर पासबुक्स एंड ऑल, तो उस पे 10 रुपए या 21 रुपए ऐसे कटे हुए दिखेंगे. क्यों? क्योंकि वो आपके एटीएम विड्रॉल चार्जेस हो सकते हैं, वो आपके ट्रांसफर हो सकते हैं. तो विद इन द कंट्री भी हम लोग चार्जेस पे करते हैं, बैंक के सर्विस चार्जेस. और अगर आप फॉरेन कंट्री से भेज रहे हो इंडियन कंट्री, तो वो भी बैंक अकॉर्डिंगली अपने चार्जेस कट करेगा, क्योंकि वो बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है आपको डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करने. तो वो बैंक अपने चार्जेस ही और शी दैट बैंक विल कट. बट इनकम टैक्स 2 बार नहीं लगेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी एक बार उसके $1,000 जो टोटल इनकम उसको लग चुका है. ओके, समझ में आया? यस मैम, थैंक यू. सो या जीडीपी और एनडीपी के बीच का डिफरेंस आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो जीडीपी और एनडीपी, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एनडीपी. तो नेट और ग्रॉस में हमेशा डिफरेंस याद रखना, इट इज ओनली द डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन. किसी भी चीज को हमको ग्रॉस में है, वो जैसे होता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसको नेट में कन्वर्ट करना है, मतलब नेट प्रॉफिट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को नेट इन्वेस्टमेंट में करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में करना है. किसी भी ग्रॉस की टर्म को अगर आपको नेट में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को डेप्रिसिएशन माइनस. The difference between gross and net is only of depreciation. तो जीडीपी हो जाएगी कन्वर्ट एनडीपी में. अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा जीडीपी एनडीपी इन्वेंट्री हो गया. अब हाउ द कन्वर्जन इज डन, I have written the things here in this table. I have written mostly all the formulas I have written. What is GDP? What is the formula for NDP? तो GNP हम लोगों ने भी देखा कि नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. वी विल ऐड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड, उससे हमको जीएनपी मिलता है. अब हम जीएनपी में से अगर हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट. दिस विल बिकम नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी. और जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट मतलब जिसमें से ग्रॉस वैल्यू नहीं है, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है. नेशनल मतलब जिसमें फॉरेन इनकम जो है इंडिया के लोगों की वो एडेड है, दैट इज नेशनल. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज आल्सो एडेड इन दैट. So that is net national product or income. Product means nothing but income. So net national income or net national product is it is considered as the real national income of any nation, because it considers it shows the real picture of the national income. GDP is a good estimator, we can say representative of national income, but NNP is the national income, which whenever we say that national income of this country, national income, we always talk about NNP. NNP is net national product. क्योंकि उसमें से डेप्रिसिएशन मतलब जो हमारा कैपिटल स्टॉक जो खराब हो गया है, जो वेयर एंड टेयर हो गया है, वो डिडक्टेड है ऑलरेडी. तो हम लोगों का नुकसान मोस्टली जो है, हम लोग जो पैसा यूज कर सकते हैं, जो नेशनल इनकम हम लोग की असली में है, तो अनप्रोडक्टिव वेज में जो वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल को मेंटेन करने में, रिपेयर करने में नहीं जा रही. तो वो सब चीजों की रियल पिक्चर, एनएनपी शोज द रियल पिक्चर ऑफ योर नेशनल.
And domestic, it is also national, it is not domestic just like GDP, because it is also including the factor income which is earned by our employees who are working outside. So net national product is the ideal representative of national income, and it is considered as national income. अब उसमें भी we will move on to the factor prices, market prices, or we can say basic prices. These are type of prices which are there, which we will be taking up. See, we will be looking at these three prices: factor prices, market prices, and basic prices. फैक्टर प्राइस जैसे मैंने बोला, फैक्ट्री की कॉस्ट, जो फैक्ट्री कॉस्ट होती है जिसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो नो इनडायरेक्ट टैक्सेस यू विल माइनस. सब्सिडीज इंक्लूड होती हैं जिसमें मींस सब्सिडीज क्या होती है, जब जो सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है, से फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है और मुझे व्हीट के लिए या मुझे फ्लोर मिल लगानी है बहुत बड़ी, तो आई विल परचेज, आई एम परचेजिंग अ लैंड, आई एम परचेजिंग अ प्लांट एंड मशीनरी फॉर दैट, ऐसे करके. So government has given subsidies on this particular sector of wheat, and whosoever will be doing business in this sector, the government will say give land for subsidized prices. Subsidized prices मतलब कम prices, discounted prices. तो subsidies जो है, हम लोग एक तरह से वो हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है, एक तरह से हम लोगों को रिबेट मिल रही है. सब्सिडीज जो हम लोगों को मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर को और फर्म सेक्टर को, लोगों को नहीं मिलती. सिर्फ प्रोड्यूसर्स और फर्म्स जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो जो लोग ग्रॉस वैल्यू एड जो प्रोडक्शन में है उस सेक्टर में, जो प्रोड्यूसर सेक्टर में है, उन लोगों को जब नेशनल इनकम उनको जब सब्सिडीज मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो सब्सिडीज क्या करती है, उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर देती है, क्योंकि एक तरह से उनको डिस्काउंट मिल रहा है. गवर्नमेंट ने समझ लो अगर माफ कर दिया उनका कॉर्पोरेट टैक्स अराउंड 5-10%, या गवर्नमेंट ने उनको कोई चीज खरीदनी थी, से फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स हैज टू बी परचेज्ड बाय सम फार्मर, तो गवर्नमेंट ने उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड, तो द गवर्नमेंट हैज सब्सिडाइज्ड द रेट्स. तो गवर्नमेंट ने एक तरह से क्या किया, सब्सिडी दे दी. अब हम लोगों ने सुना होगा एलपीजी की सब्सिडी होती है. एलपीजी सब्सिडी मतलब असली प्राइस जो है सिलेंडर गुड्स की वो 1000 रुपीज, लेकिन गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज रेट पे दे रही है जनरल पब्लिक को, स्पेशली उन लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल लोगों को, उनको 500 रुपए में दे रही है या 600 रुपए में दे रही है. तो 400 रुपीज की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है लोगों को. सो दैट इज कॉल्ड सब्सिडी. इट इज नथिंग बट द डिस्काउंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सो दैट इज सब्सिडी which is given by the government, and indirect taxes is also charged by the government. तो indirect taxes charge किए गवर्नमेंट ने. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग एक तरह से हम लोगों का लीकेज है, हम लोगों की इनकम कम करता है टैक्स. तो व्हाट वी विल डू, we will minus the indirect taxes from the market prices, and we will add the subsidy to the market prices, and we will minus the indirect taxes from the market prices. तब हमको फैक्ट्री की रियल कॉस्ट पता पड़ेगी कि what is the factory cost. So that is nothing but the factor cost or factor prices. So I think I have written somewhere, yes. Factor cost is market prices, जो हम लोगों को मार्केट में जो गुड मिलता है उसमें से minus indirect taxes plus subsidies. So that will give us the factory price of the good. अगर हमको पता चल जाए कि इस गुड पे अगर समझ लो 10 रुपीज का टैक्स है और सब्सिडीज गवर्नमेंट सब्सिडीज इस पर्टिकुलर गुड में को प्रोड्यूस करने में अगर फॉर एग्जांपल 1 रुपए पर गुड पे मिली थी, 1 रुपए पर मिली थी, तो व्हाट वी विल डू, 50 रुपीज का अगर मार्केट प्राइस है मेरे पास, समझ लो मैगी का, कि ये समझ लो एक मैगी का पैकेट है, दिस इज अ मैगी पैकेट एंड इट इज अ 50 रुपीज, तो 10 रुपीज इज द टैक्सेस. So I will minus the 10 rupees, 50 minus 10, 40, and I will add 1 rupee of subsidy which is given to the company, Nestle company, by government, say at each good, production of each good. So that 1 rupee I will add. So this 40 plus 1, 41 rupees. So 41 will be the factory cost of the real factory cost of producing one packet of Maggi. So that will be factor cost or factory cost. मतलब हम लोग टैक्सेस, जो हम लोगों के टैक्स इंक्लूड होते हैं, जो बाजार में जो मटेरियल आता है वो उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड रहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस,
वो गुड्स टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी जो भी है वो इंक्लूडेड रहता है उसमें। लेकिन जब हम उसको हटा दें और सब्सिडीज जो थोड़ी बहुत मिली है, कुछ सेक्टर में सब्सिडीज मिलती भी नहीं, तो सब्सिडीज नहीं मिलती तो आपको कुछ नहीं करना, सब्सिडीज का कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, इट इज जीरो। बट इफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन दैट, यू हैव टू माइनस दैट। तो मार्केट प्राइसेस में से व्हेनेवर यू माइनस द इनडायरेक्ट टैक्सेस, यू विल गेट फैक्टर प्राइस, दैट इज फैक्टरी प्राइस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैडम फैक्टर को मैम। नहीं इंक्लूड रहता है क्या? हाँ क्या साहिल, वापस बोलना। फैक्टर कोस्ट में कोई भी टैक्स नहीं शामिल रहता है? कोई सा भी नहीं, कोई सा भी नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारे जितने भी टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही आते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ एक होता है, वो होता है इनकम टैक्स, जो आपकी इनकम पे लगता है। तो यहाँ पे कोई इनकम तो है नहीं, क्योंकि अभी गुड्स जो है वो सेल नहीं हुआ है। जो गुड्स पे लगता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनकम पे लगता है उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। So all these things you should write it down. Whenever I say these things, it will clarify your doubts, it will clear your concepts. So market prices में हमेशा taxes include रहते हैं, क्योंकि हम जो चीज मार्केट से खरीदते हैं, always it is written MRP, means MRP के साइड में ब्रैकेट में लिखा रहता है inclusive of all taxes, means all the taxes are included in that. So you are not aware कि the price which you are paying, it is the factory price or it is what is not the real price at which the production has been done. प्रोडक्शन अगर 41 रुपीज में हुआ है, लेकिन वो टैक्स इंक्लूड होकर तुमको मिल रहा है वो चीज 50 रुपीज में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर प्राइस एंड मार्केट प्राइस। अब बेसिक प्राइसेस का एक कंसेप्ट है which has been included very recently. Basic prices are those prices which undertake only the production taxes. जो एक बार लगते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी में सिर्फ एक बार लगते हैं। जैसे अगर कोई लैंड परचेज किया है मेरी कंपनी ने, मुझे फॉर एग्जांपल आई वांट टू एस्टैब्लिश अ सीमेंट मिल, सीमेंट का प्लांट लगाना है मुझे, तो उसके लिए आई हैव टू परचेज अ लैंड। तो लैंड परचेज करने के बाद मुझे उस पे जो स्टैंप ड्यूटी, जो रजिस्ट्रेशन फीस, मेरे नाम पे जो लैंड मैंने रजिस्ट्री कराई है उसकी फीस, so all these are production taxes which the producer has to pay only one time. But उससे उसकी cost of production increase हो रही है, because he has to buy a land for his plant, then he will have to register that land in his company's name. तो रजिस्ट्री की कोई फीस लगेगी, तो that registration fees, stamp duties, all these things are considered under production taxes. जो प्रोडक्शन एक बार के प्रोडक्शन पे लगती है, so that production taxes less the production subsidies. और सब्सिडीज, प्रोडक्शन सब्सिडीज होती है जो एक बार मिलती है प्रोडक्शन के टाइम। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन, हाँ, these production taxes and subsidies are paid or received in relation to production and are independent of the volume of production, such as land revenue, stamp and registration fees. Now product taxes and subsidies are paid or received per unit or per good. हर एक गुड पे एक एक रुपए अगर मैं 1000 गुड कर रही हूँ प्रोड्यूस, तो 1000 रुपीज की सब्सिडी, तो 1 रुपी पर गुड I am getting the subsidy or I have to pay the tax. Same taxes which are levied on per unit of good. हर गुड पे एक एक रुपए टैक्सेस मुझे पे करना है, या मैंने इंक्लूड किया है, तो that will be product taxes which is received or paid per unit of good or per unit of product. Example, excise duty, service tax, goods tax, export and import duties, जो हम लोगों को हर एक गुड पे जो हम लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उस पे हमको पे करना पड़ता है। लेकिन प्रोडक्शन टैक्स क्या होते हैं, वो सिर्फ एक बार पे करना पड़ता है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस। लैंड रेवेन्यू हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई मेरे लैंड की या मेरे घर की या मेरे ऑफिस की, जो भी रजिस्ट्री करानी पड़ती है हम लोगों को, तो दैट रजिस्ट्री फीस इज paid only one time. You don't have to pay on each and every good. That is something but called production taxes or production subsidies.
सो कुछ पूरा लमसम सब्सिडी दी कि समझ लो एक बार गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी कि रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी, द गवर्नमेंट हैज डिस्काउंटेड द, तो दैट इज प्रोडक्शन सब्सिडी यू कैन से। बट अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कि मैं हर एक गुड जो आप लोग सेल कर रहे हो उस पे हम लोगों की सब्सिडी 1 रुपीज की रहेगी, हम लोग उसको 1 रुपए कम में खरीदेंगे, तो 1 रुपए ज्यादा में खरीदेंगे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है, तो गवर्नमेंट माइट give them buy the things at premium, or government will instead of taking some tax from that, government बोलेगी मैं पर यूनिट टैक्स जो है आपको माफ करती हूँ, तो पर गुड पे आपका 1-1 रुपए माफ होएगा। तो ऐसे करके गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी पर गुड, पर यूनिट ऑफ गुड, हर एक गुड पे जो भी आप प्रोड्यूस करोगे, अगर आप 100 गुड कर रहे हो तो 100 रुपए, 200 कर रहे हो तो 200 रुपए, तो हर एक गुड पे 1-1 रुपए 1-1 रुपए आई विल बी गिविंग यू सब्सिडी। So that will be called product subsidy or product tax. So basic prices होती हैं जब आप factor cost में, when you will add in basic prices, when you will add production taxes, जो one time tax लग रहा है, so when at factor cost you will add production taxes, net production taxes, what is that? Production taxes minus production subsidies, उनको माइनस करके जो बच रहा है दैट इज नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, तो दैट विल बी एडेड टू द फैक्टर कॉस्ट, दैट विल बिकम द बेसिक प्राइसेस। एंड व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट मार्केट प्राइसेस, तो मार्केट प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऐड द नेट प्रोडक्ट टैक्स ऑल्सो, ये तो एडेड है ही प्रोडक्शन टैक्स ऑलरेडी बेसिक प्राइस, अब हम इसमें फैक्टर कॉस्ट में नेट प्रोडक्शन टैक्स भी ऐड कर देंगे और नेट प्रोडक्ट टैक्स भी ऐड कर देंगे, तो अब वो हो जाएगा मार्केट प्राइस। यहाँ मार्केट प्राइस में what you can do, you can add the indirect taxes and you can minus the subsidies, and you can minus the subsidies। जैसे हम लोगों की मैथ्स की इक्वेशन होती है तो वैसे ही मार्केट प्राइसेस विल गो इन द लेफ्ट हैंड साइड, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा इस साइड, और यहाँ ये वाली चीजें चली जाएगी इधर, तो मार्केट प्राइसेस जब इधर रहेगा माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस, माइनस सब्सिडीज। तो ये जो चीजें हैं these things will flip and it will go to the left hand side of the equation. Similarly when it मैथ्स की रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाएगा LHS में जाके प्लस, और प्लस जो है वो दूसरी जगह जाके हो जाएगा माइनस, it will change its sign when it will be transposed to the other side of the equation. सिंपल मैथ्स का रूल है, तो उससे भी you can derive the formula. And the other formula is या तो basic prices में net product taxes add कर दो, that will also give you market price. It is one and the same thing. समझ में आया सबको? You just have to revise all these things. I will explain these things to you, but revision is very important. पढ़ना पड़ेगा इनको। So now let us this factor cost, basic price, market price, GNP, NNP, NNP at factor cost means अगर NNP दे रखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे रखा है, तो उसके लिए मुझे उसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल डिडक्ट द इनडायरेक्ट टैक्सेस, आई विल ऐड सब्सिडीज, तो इट हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और what I will do, net national product at market price minus net indirect taxes. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है हम उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का, तो दैट विल बी deducted from the NNP at market price, that will give us net national product at factory cost or factory price. So this particular term NNP at FC, it is the ideal national income which is there for our country, which we consider for our country. तो यहां तक सबको क्लियर हुआ? एवरीवन यहाँ पे यहाँ तक सबको समझ आया? shall I move to the next concepts?
Yes, ma'am. पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम इज द इनकम विच इज स्पेशली फॉर हाउस होल्ड सेक्टर। नेशनल इनकम में थोड़ा हम लोगों ने देखा था ना, इनकम मेथड्स जब हमने कैलकुलेट की थी कि वेजेस, सैलरीज प्लस प्रॉफिट्स प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट, ऐसे करके W प्लस P प्लस I हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया था। तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या जाते हैं? मोस्टली सैलरीज और वेजेस जाती है, यहाँ इंटरेस्ट पेमेंट्स जाते हैं, यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर द मेजर पार्ट विच गोज टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज गोइंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर, इट इज कंसिडर्ड एज पर्सनल इनकम। तो अब पर्सनल इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम से, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट FC, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब ये क्या होता है? लेट अस लुक एट दिस। सो आउट ऑफ आवर नेशनल इनकम विच इज अर्न बाय द फर्म्स एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, जो प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन कंपनीज और इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट की जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो बिजनेस करते हैं, तो वो लोग कुछ पैसा कमाते हैं, तो देयर इनकम इज आल्सो कंसिडर्ड इन प्रॉफिट्स, considered as a income for the country, which is calculated under income method. The profits which the government companies and the private companies which they are earning, so that profit, a part of profit is not distributed among the factors of production. मतलब थोड़ा बहुत पैसा वो देते हैं अपने एज अ सैलरी अपने एम्प्लॉयज को, थोड़ा बहुत वो देते हैं रेंट अपने लैंड को रेंट पे लेने के लिए, बचा हुआ जो है they will keep to themselves as their own profits, they will not distribute that, so that is called undistributed profits, which these big companies and government companies keep to themselves, they don't distribute among their factors of production of labor and capital and land. तो उनमें जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, जो सिर्फ इंटरप्रेन्योर के पास है, द ओनर ऑफ द कंपनी, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट व्हिच इज रिटेन्ड बाय दिस ओनर. So this undistributed profit, we have to deduct this undistributed profit from national income in order to arrive at personal income. Since undistributed profit does not accrue to households, हम लोग पर्सनल इनकम जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो पर्सनल इनकम का मतलब ही होता है कि जो इनकम सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर के पास जा रही है. Household sector is the major sector which is comprising the कंजम्पशन डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है जो, और मोस्टली नेशनल इनकम का सबसे बड़ा पार्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से आता है. इफ यू विल गो थ्रू द डेटा, if you will see the statistics, you will come across that consumption expenditure is the major chunk which helps in increasing the national income, the demand, the production in the economy. And that major consumption expenditure comes from the household sector's income. So personal income have to be looked at कि personal income, national income में से personal income का part कितना है. तो personal income means nothing but the income which is going to the household sector as a whole. उसमें से national income में से हम लोग minus करेंगे undistributed profits, net interest payments made by households. Household जिन्होंने लोन लिए हैं, वो लोग अपने लोन पे पेमेंट करते हैं, मींस इंटरेस्ट पे करते हैं. तो दैट इंटरेस्ट पेमेंट्स, कुछ लोगों ने लोन दिए हैं तो वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो इंटरेस्ट जो देते हैं वो और जो चार्ज करते हैं वो, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी द नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउसहोल्ड. दैट विल आल्सो बी डिडक्टेड, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने अज्यूम कर रखा है, हम लोगों ने कि बहुत लोगों ने लोन्स ले रखे हैं, लोन्स पे दे आर पेइंग इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट्स और टू बैंक को. तो नेट माइनस करेंगे हम लोग, क्योंकि ये इनकम में से कम हो रहा है, वो पैसा बैंक्स के पास जा रहा है, हाउस होल्ड के पास नहीं जा रहा. तो दैट इज माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स होता है तो इनकम टैक्स, एक तरह से इनकम पे जो टैक्स लगता है वो लगता है सैलरी वाले लोगों पे, और कॉर्पोरेट टैक्स इज द टैक्स विच इज लेविड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस पीपल. तो दोज हु आर बिजनेसमैन, they are earning profits, so they will have to pay corporate tax from their income. लोगों की जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी इनकम क्या होती है? उनकी इनकम की प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से वो अपने लिए सैलरी करते हैं.
तो उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स उनको पे करना पड़ता है विच इज ऑन देयर कंपनीज इनकम। तो जो उनकी इनकम है प्रॉफिट, that tax which they are paying on that profit is called corporate tax. तो corporate tax minus करते हैं हम लोग. Then we add transfer payments to the household from the government and the firm. Transfer payments क्या हुआ, जैसे पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गई, सीनियर सिटीजन्स को पेंशन हो गई, गवर्नमेंट पे कर रही है, तो ये सब हम लोग पर्सनल इनकम में ऐड करेंगे. So this national income minus undistributed profit minus net interest payment made by household, कॉर्पोरेट टैक्स को भी माइनस करेंगे. ये चीजें हम लोगों का पैसा कम कर रही है, हमारी इनकम कम कर रही है, तो वो सब चीजें हम लोग माइनस करेंगे पर्सनल इनकम से. जो चीजें हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स जो पर्सनल इनकम में जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास नहीं जाएगा उसको हम लोग माइनस करते हैं. तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कर दिए हमने, हाउस होल्ड सेक्टर के पास इंटरेस्ट पेमेंट हो रहे हैं वो हमने माइनस कर दिए, हाउस होल्ड सेक्टर को कॉर्पोरेट टैक्स उनके पास किया वो हमने माइनस कर दिया. हाँ, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को और बच्चों को स्कॉलरशिप, पेंशन ये सब मिल रही है गवर्नमेंट से, तो वो ट्रांसफर पेमेंट्स हम लोग ऐड करेंगे हमारी पर्सनल इनकम की कैलकुलेशन. The transfer payments to the household sector from the government and firms that will be added to form the this formula of personal income. अब डिस्पोजेबल इनकम होती है पर्सनल इनकम माइनस इनकम टैक्स विच इज लेविड ऑन द सैलरीज एंड वेजेस. तो पीआई माइनस पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट. नॉन टैक्स पेमेंट मतलब समझ लो किसी को कोई फाइन लगा है, कोई पेनल्टी लग गई रूल तोड़ने की, सिग्नल तोड़ने की, या टाइम पे लोन पे नहीं किया तो उसको उसकी लेट फीस लग गई, ऐसे करके जो नॉन टैक्स पेमेंट्स होते हैं जो हम लोग करते हैं, तो ऐसे करके सबका कलेक्टिवली माइनस किया. कुछ लोगों का कोई पेनल्टी नहीं लगती तो उनके उसमें हम लोग माइनस किया. तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गई पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स और इनकम टैक्स minus the non-tax payment which is fine, penalties and everything. So this is our personal disposable income. Now what is national disposable income? मतलब पूरे कंट्री की मिला के, that is net national product at market price plus the other current transfer from the rest of the world. समझ लो हमने बाहर से, हमको कोई ग्रांट मिली, कोई गिफ्ट मिला फॉरेन कंट्री से, हम लोग के कंट्री में डिजास्टर हुआ तो हमको रिलीफ फंड मिला, तो बाहर से जो हमको जो चीज फ्री में मिल रही है मतलब एज अ चैरिटी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो व्हेन वी ऐड दिस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द नेट टू आवर नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस, so that will be called national disposable income. So I hope all these concepts are clear. I will be sharing the presentation, you can look at this table. So you will have an idea. These formulas are very important. Is it clear till here to everyone? Yes, ma'am. Now only the last topic, which is real GDP versus nominal GDP. Then we can move on to our doubts. अगर किसी को अभी तक कोई डाउट है कुछ पूछना है. So let us move on to real versus nominal GDP. Nominal GDP values the production of GDP. Nominal GDP is GDP which is measured at current prices. Real GDP is the GDP which is measured at constant prices. Now constant prices क्या होते हैं? The prices which are of the prices of the base year. अब base year एक ऐसा year होता है जो जिस year में ना तो ज्यादा कोई fluctuation होता है, वो काफी stable year है. उस year में ना तो inflation बहुत ज्यादा था ना बहुत कम था. It was a moderate year without any mishappening, without any fluctuation, without any volatility. The year which is very much smooth. तो उस ईयर के प्राइजेस हम लोग उसको बेस ईयर कंसिडर करेंगे. दैट ईयर कैन बी एनी ईयर.
तो अभी करेंटली इंडिया में बेस ईयर इज 2011 एंड 12. याद रखना इंडिया में whenever we calculate statistics, Indian statistics, we consider 2011 and 12 में जो prices थी goods and services, उन prices को हम लोग base year prices और कहते हैं constant prices. It is taken as the constant year, and the prices, the GDP which is calculated at those year price, that year price is called real GDP. अगर हम लोगों को 2022 की GDP calculate करनी है, लेकिन हम लोग जो प्राइसेस कंसिडर कर रहे हैं वो प्राइस हम लोग 2011-12 ही कंसिडर कर रहे हैं. So that GDP which we will be calculating at constant prices of 2011-12, it will be called real GDP. And the nominal GDP is the prices, आज के prices, 2022 के prices. अभी क्या है मार्केट में prices, इन्फ्लेशन कितना है, WPI CPI कितना है, उसके accordingly when we will calculate the GDP, that will be called nominal GDP. So this was the basic difference between real and nominal. Real GDP is considered to be the good indicator because it shows you the real picture. Nominal GDP increased आ सकता है क्योंकि हर साल prices inflation increase हो रहा है. Prices keep on increasing, but जरूरी नहीं है कि आपका production भी increase हुआ है. अगर पिछले साल से इस साल हम लोगों की GDP increase हुई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. उसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्राइस सिर्फ प्राइसेस ही इंक्रीज हुए हैं. तो प्राइसेस इंक्रीज की वजह से जो ग्रोथ, जो रेट है, ग्रोथ रेट वो ज्यादा दिखा रही है. Instead of 7% it is showing 8% just because of the increase in the prices. So an accurate view of the economy requires adjusting nominal to real GDP by using GDP deflator. The GDP deflator shows that it is shows the difference between real GDP and nominal GDP. It is a measure of the price level calculated as the ratio of nominal GDP to real GDP times 100. It tells us the portion of the rise in nominal GDP that is attributable to a rise in prices rather than a rise in quantities produced. As I said, जरूरी नहीं है कि हम लोगों का GDP इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो प्रोडक्शन हम लोगों का गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा हुआ. ये भी हो सकता है कि सिर्फ प्राइसेस बढ़े उन गुड्स एंड सर्विसेज के, जिस वजह से there is an increase in the GDP growth. This is the formula for GDP deflator. How we can calculate GDP deflator? Nominal GDP upon real GDP into 100. It will show you the GDP, the difference. Sorry, it will show you the number of times the prices have increased across these years. So it is nothing but the GDP deflator. Is GDP a good measure of economic well-being or economic welfare? It is the best single measure of the economic well-being of society. GDP per person tell us the income and expenditure of the average person in the economy. GDP per person is called per capita income or per capita GDP. Higher GDP per person indicates a higher standard of living. GDP is not a perfect measure of happiness and quality of life because it does not necessarily mean if the gross domestic product of a nation is increasing. It does not mean that the standard of living, the quality of life of the citizens of that country is also increasing. Let us look at some statistics. Quality of life and GDP. The real GDP per person, matlab that is per capita income. United States की $35, Germany की $27, Japan की $26,000, Mexico 8,000, around 8,000, 9,000 is there, and India की $2,670 per means per capita income or per capita GDP. बट अब यही देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी ईयर है, मतलब इंडिया में एवरेज लेवल पे 64 इयर्स तक एक इंसान जी सकता है, लेकिन लुक एट द लाइफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज 77.
Similarly, adult literacy or population, percentage of population, कितने लोग literacy क्या है वहाँ पे, वहाँ की literacy rate 99% है. And look at India's literacy rate, it is 61%. Internet usage there is 55%. India ka internet usage is 2%. However, these are old figures, so now this might have changed drastically. But this literacy and life expectancy, this might be some upper niche, but almost the case is similar. The scenario will be same. कि हम लोगों की जीडीपी भले ही से बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोगों का लिटरेसी, हम लोगों का पॉवर्टी लेवल जो है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, it might not have decreased so much because of different reasons. तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों का पैसा इंक्रीज हो रहा है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज फॉर दैट डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Development of infrastructure, development of education sector, different things is important instead of only earning money or producing goods and services. So GDP does not consider all these things in itself. Some things that contribute to well-being are not included in GDP. The value of leisure, that is free time, creative time. Value of clean environment, value of almost all activity that takes place outside the market, such as the value of time parents spend with their children, value of volunteer work, social service, etc., etc. So all these things are not included in GDP. So that is why GDP, we can say GDP is not a perfect representative of welfare of the society. Welfare of the society. Now look at the summary. Nominal GDP uses current prices to value the economy's production. Real GDP uses base year prices or constant prices to value the economy's goods and services. The deflator measures the ratio of nominal GDP to real GDP. It measures the level of prices in the economy. GDP is a good measure of welfare, economic welfare, not overall welfare, because people prefer higher to lower income. It is not a perfect measure of well-being because of something such as these things which are written here. So this was all about the GDP and national income. One more thing, extra topic was given in your NCERT, that is WPI and CPI. So let me read those things out. Yeah. There is another way to measure changes in prices in an economy, which is known as consumer price index. Consumer price index is the measure of which India uses to measure inflation in the economy. You might have read these things in the newspaper articles. The CPI increased. Consumer price index is the measure. Consumer price index is the measure of inflation, this and that. So CPI is the index of prices of a given basket of goods. एक goods की basket होती है, उन सब goods की जो prices है, उसको इकट्ठा किया जाता है, which are brought by the representative consumer. एक consumer जो भी goods खरीदता है, generally, average consumer, बनाई जाती है इन goods की, उनकी prices देखी जाती है और उनकी prices को multiply किया जाता है quantity of goods से. तो जितने गुड बिके उससे हम उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई करके हम लोग ये निकालते हैं कि कितना इन्फ्लेशन है. दिस इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ अ गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटीज व्हिच आर brought by the representative consumer. CPI generally expressed in percentage term. We have 2 years under consideration. One is base year, the other is current year. तो GDP deflator में और consumer price index में फर्क होता है. What is the difference? We calculate the cost of purchase of given basket of commodities in the base year. And we also calculate the cost of purchase of same basket in the current year. Then we express the current year basket of goods as percentage of the old year or base year basket of goods. So this gives us the consumer price index of the current year, which is based on the base year prices. For example, let us take an economy produces 2 goods, rice and cloth. A consumer buys 90 kg of rice and 5 pieces of cloth in a year. Suppose in the year 2000, the price of rice is 10 and price of cloth is 100.
So the consumer has to spend the consumer has to spend the total sum of 10 into 90, that is 900 on rice, and 100 into 500 on clothes. So his total expenditure on those two items of the economy is 1400. Now the prices of rice and cloth has increased to 15 and 120 rupees in the year 2005. To buy the same quantity of rice and clothes, the buyer has to pay 1350 rupees plus 600 rupees respectively for rice and cloth. Now his total expenditure will be 1950 rupees. So the CPI, consumer price index, will be calculated as current year में 1950 rupees, this year 2005 is the current year, say for example. So what is the goods and their prices there in today's in this year? That is 19 rupees and 1950 rupees. And what was the price of the same goods in 2000, in the year 2000? So that was 1400. So the ratio has been ascertained by that, and we multiply it by 100. So 139.39. So this is the consumer price index of 2005. Similarly, there is wholesale price index. This may differ in value or margin. Wholesale price index जो होता है, जो wholesalers जो होते हैं, we buy goods from retail stores, but those retail stores buy goods from wholesale stores. तो वो wholesalers किस price पे बेच रहे हैं? When we take the prices of wholesale, that is called wholesale price index. What are the differences between GDP and GDP deflator and CPI or consumer price index? The differences are: the goods purchased by consumer do not represent all which are produced in a country. GDP deflator takes into account all such goods and services. CPI includes prices of goods consumed by the representative consumer. Hence, it includes prices of imported goods also. But GDP deflator does not consider, because it is considering GDP as its base. The weights are constant in CPI. They differ according to the production level in GDP deflator. So these are the differences between GDP deflator and consumer price index. So we have discussed already ki why GDP is not a good estimate of welfare, because it does not guarantee equitable distribution of income. Distribution of GDP or distribution of income, how uniform it is, means if it is equally distributed or not. Non-monetary exchanges are not evaluated in monetary terms. जो goods के बीच में अगर मैंने apple लिया, if I sell that apple for guava, so that the goods which are not expressed in monetary terms, they cannot be included in GDP calculation. So non-monetary exchanges are not included. Then externalities. Externalities refer to the benefits or harm of a firm or individual which causes to another for which they are not paid or penalized. तो environment का नुकसान कितना होता है, climate change कितना होता है. So all these are externalities which come due to the production activity. GDP does not include those things. So that is why GDP is not a good representative of welfare in the economy. So I hope all these things are clear to everyone. Yes, ma'am. Any questions, anybody? I will be sharing these the PPT which I have shared today in the group after the class. So don't worry regarding that, and I will upload the recording of the lecture tomorrow morning. Okay. किसी को कोई डाउट है, कोई एक्स्ट्रा चीज कुछ पूछना है, कुछ आर्टिकल, कुछ if you want to add to the discussion, you are welcome for that.
Anything which you want to ask or something like that? No doubts, nothing. So shall we end the session? Okay, then everyone have a good day. Ma'am, happy Women's Day. Yes, yes. Happy Women's Day to all the girls. Thank you so much. Thank you so much, Tanuja, and happy Women's Day to every girl in the class, everyone in your home also, your mothers, your sisters, everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. So now you can also, if you have any doubt, you can ask. Otherwise, we will end the session. Okay. So today there are no doubts. So shall we end the session? Yes, ma'am. Okay. Chalo, have a good day, everyone. Thank you, ma'am. Good night. Yeah. Mhm.